Hello students, the question is a bob of mass m is suspended at a point O by a light string of length L and left to perform vertical motion circular as shown in figure. Initially, by applying horizontal velocity v naught at point A, the string becomes slack when bob reaches at point D. The ratio of kinetic energy of the bob at the points B and C is option 1 2, option 2 1, option 3 4, and option 4 3. So the problem is based on the topic uniform circular motion in vertical direction. So when there is a uniform circular motion in the vertical direction, there is effect of gravity also, and we know that the minimum velocity, the minimum velocity required, the minimum velocity required at the bottommost point, so that the particle completes circle, just completes the circle, is given by square root of 5 GL, where L is the length, L is the length of the string. So this is the data which we have to use to solve this particular problem. Now we have to find out the ratio of kinetic energy of the bob at point B and point C. So to find out the ratio of kinetic energy, we can apply the principle of conservation of mechanical energy. First between points A and B, then between points A and C. Now at point A, if we choose this point as a reference, of height h equals to 0, then we can say that the potential energy at this point is 0. The potential energy at this point is 0. And the kinetic energy is given by, the kinetic energy at point A is given by half m v naught square. And as I have discussed that the minimum velocity required is square root of 5 gl, we can put this value here. So the kinetic energy becomes half m multiplied by 5 gl. So we can write it as 5 by 2 mgl. So this is the kinetic energy at point A. The potential energy at this point is 0. The potential energy at point A is 0 because we have taken this point as a reference and the height of 0. Now to find out the total mechanical energy at point B, we can write kinetic energy at B plus potential energy at point B. Now the potential energy at point B can be easily calculated by the trigonometry. For example, this length OB, it is L. The total length OA is also L. Now suppose if we draw a perpendicular point from point B to OA line, then suppose it meets at some point E, then OE length or EA length are same as L by 2, and we have to calculate the value of EA. So first of all, OE from this triangle you can write basically this is base, OE is base and OB is the hypotenuse. So base and hypotenuse are related by cos. So cos of 60 is equal to OE upon OB, and cos of 60 is 1 by 2. So 1 by 2 is equal to OE upon OB. OB is basically the length of the string. It is L. So OE comes out to be L by 2. And when OE becomes L by 2, EA is also equal to L by 2 because EA is L minus OE. So we can say that the length EA is equal to L by 2, and it is used to calculate the potential energy at point B. Potential energy is equal to mg into the height. So this height EA is L by 2. So we can say that potential energy is mg L by 2. So Ke at B plus mg L by 2 is equal to the total mechanical energy at point A,
which is equal to the kinetic energy only, because the potential energy at this point is 0. So we can write here as 5 by 2 mgl. Suppose we call this as equation 2. So from equation 2, we put this value here 5 upon 2 mgl by the principle of conservation of total mechanical energy. So in this way, kinetic energy at point B comes out to be 5 mgl minus mgl by 2, 5 by 2 mgl minus mgl by 2. So this becomes 2 times mgl. Now let us call this as equation number 3. Now we have to calculate the height of the point C with respect to point A. Suppose we drop a perpendicular here from C to line OD, and suppose it meet at this point F. So basically we have to calculate this AF. We have to calculate this AF length. Now OA is L. We have to calculate OF now. So OF can be easily calculated by this triangle OFC. So this is base, OF is base, and OC is the hypotenuse, which is equal to the length of the string, which is L. So as we have discussed earlier, this becomes OF becomes L by 2. So we can say that total length FA is equal to OA plus OF. So L plus L by 2. So this length comes out to be 3L by 2. This is AF. Now this is used to calculate the potential energy at point C. Now again we do the similar process for point C. So for point C, the kinetic energy at point C plus the potential energy at point C, potential energy at point C, and potential energy at point C is mg into 3L by 2, and Ke at point C plus mg 3L by 2. This is equal to the total mechanical energy at point A. We are equating the total mechanical energy at point C and point A respectively. So as discussed earlier, that here there is only the kinetic energy component, the potential energy at point A is 0. So that's why this is equal to 5 by 2 mgl. After calculating this value comes out to be, kinetic energy at point C is equal to 5 by 2 mgl, minus 3 by 2 mgl. So this comes out to be mgl. Now let us call this as equation number 4. Now we have to find out the ratio of the kinetic energy at point C and point B and point C. So Ke at B divided by Ke at C is equal to, this comes out to be 2 times mgl divided by mgl. So mgl cancels with mgl, so this comes out to be 2:1 ratio. So we can say that option 1 is correct here. तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम पूछी गई है। इसमें कहा गया है कि एक बॉब है जिसका मास m है, सस्पेंड किया गया है उसे पॉइंट O पे। एक लाइट स्ट्रिंग लेंथ L है जिसकी उससे कनेक्टेड है और इसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया गया है, और इसको बॉटम मोस्ट पॉइंट यानी A पॉइंट पे एक इनिशियल वेलोसिटी v0 दी गई है ताकि जस्ट पॉइंट D पे जाके स्ट्रिंग स्लैक कर जाए। हमें बताना है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बॉब की पॉइंट B और पॉइंट C पे। तो सबसे पहला जो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो होता है v0 मिनिमम बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 5gl। यानी अगर इतनी मिनिमम वेलोसिटी दी जाए तो वो पर्टिकुलर बॉब जस्ट D पॉइंट को टच कर लेगा और एक सर्कल को फिर कंप्लीट कर लेगा। फिर उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A निकाली। सबसे पहले हमने जो कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया कि पॉइंट A पे को हमने रेफरेंस पॉइंट मानते हुए पोटेंशियल एनर्जी को उसकी 0 पुट किया, क्योंकि H 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट A की 0 हो जाएगी। B पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं KEA। इसे हम कैलकुलेट ना करके इसे जस्ट केवल एक वेरिएबल के तौर पे लेके चलेंगे, क्योंकि हमें लास्ट में रेशियो निकालना है काइनेटिक एनर्जी B और काइनेटिक एनर्जी C का। तो इसे जस्ट एक वेरिएबल की तरह पुट करते हुए हम चलेंगे। तो ये बराबर है हमारा हाफ mv0 स्क्वायर, क्योंकि हाफ mv0 स्क्वायर जो है वो बराबर है द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A। तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है 5 by 2 mgl। इसको हम आगे यूज़ करेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी
को हमने इक्वेट किया एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। लेफ्ट हैंड साइड में हमने रखा टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, जो बराबर होगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस mg/L/2 इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ए। पोटेंशियल एनर्जी इसकी इस पॉइंट पे 0 है, तो इस तरह से टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमने पॉइंट ए पे लिख ली। सॉल्व किया तो काइनेटिक एनर्जी एट बी निकल के आया 2mgL। इसे इक्वेशन 3 कहा हमने। फिर उसके बाद इसी तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड में टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखी पॉइंट सी पे, जो बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी निकालने के लिए हमने सबसे पहले ए एफ हाइट निकाली बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हुए, तो वो हाइट निकल के आई 3L/2 और इसको बराबर रख दिया हमने राइट हैंड साइड में टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, जो कि केवल काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में है 5/2 mgl। mg इंटू 3L/2 को हम राइट हैंड साइड में ले गए, सब्ट्रैक्शन किया तो हमें जो रिजल्ट मिला वो मिला mgl। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी बराबर mgl, इसको हमने इक्वेशन 4 कहा। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी का रेशो निकालने के लिए इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड किया, तो यहाँ से फिर हमारा जो रेशो निकल के आता है वो आता है 2:1 रेशो। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।